Friends, good morning and welcome to Mid-Cup Cricket Ground, Kuwait Premier League, KPL 17 B Division, final game between Scorpions Kuwait and RCCREGGAI. Well, the news from the centre, the Scorpions Kuwait won the toss and they elected to bowl first. Here got a Sumesh and Ubesh, the two batters in the middle, along with Nitish Gandhi, will start the proceedings for Scorpions Kuwait from the far end. Here we go, the first delivery, slightly fuller, placing it on the onside, sets up for a single is Umesh. This time placing it on the offside is Ubesh. Both the batters are off the mark with the easy single stone offer. So long off and long on, man at deep extra cover, deep point, third man. This time good shot on the offside. As a protection, the form of a deep point there. The first three deliveries, the bat bowler have been on a fuller length. Mind you, there is no one inside the 30-yard circle is allowing the batter to take easy runs here. 3 without loss. First 3 deliveries have been bowled out. Again, this time good length. It's a good one. Placing it on the offside. Smart batting there. Again a single. So 4 came from first 4 deliveries. This time certainly it's a wide. Yep, confirmation from the umpire. Again going away from the out batsman's arc there, but this time it's too much wide. And first additional run added to the tally. Again this time good delivery there. A tap on the offside. A quick single taken. 1 gone. 5 without loss. 6 without loss. RCCREGGAI. Again 1 delivery to go. It's because of that wide ball. This time it's a cover inside the ring. Yeah, it's a smart captaincy. Well thinking from the captain. 1 gone, 6 without loss. RCCREGGAI.
So first over went for 6 runs after winning the toss. Scorpions Kuwait sending in RCCREGGAI batters to bat in. Sumesh and Ubais had a watchful start. The first over resulted in 6 runs. We got to Riot, just single being taken, and score moves on to 7 for the loss of no wicket. Again, good one, the extra bounce doing the trick. The batsman wanted to place it on the offside. Because of that extra bounce, he couldn't able to connect the ball. And ball sneaks through into the gloves of wicketkeeper. Again, this time the ball kept bit low. It's all happening here at the mid-club cricket ground. The previous delivery was extra bounce, and this time the ball kept bit low. Took him for a surprise. He's a base there. 2 from first 4 deliveries. Oh, this time outside edge, flies away. But the man at deep third man was a bit low there. Was a bit slow to react on that occasion. He failed to balance himself while releasing the ball, and batters were smart enough to take 2 runs. Oh, this had to be put away. This had to be put away. Unfortunately for the batter, he finds the man at extra cover inside the ring. End of the over. It's a good one for Scorpions. 9 without loss. Just 3 runs came from that over. So Nitish to continue his second over, first one, placing it on the onside. Batsman took a single there. Oh, this time again, man at deep point, quickly moves to his left. Overthrow, poor throw. The keeper was not in a good position to collect that one, gather that one. Good fielding, but unfortunately poor throw resulted in additional run there. So 11 for no loss should have been 12, because the batters didn't touch the crease on the other end. Umpire judged it as a 1 run short. 11 for no loss. Nitish running in, and he bowls. This time swing and a miss again. Well, Scorpion bowlers were spot on at the moment.
Pura tu saya. So 14 without loss. Again, this time the batters had to reach for it. The umpire given it as wide. Well, it's been a good over so far. Just 2 came from this over. This time the bowler saw the batter. Slight confusion in the middle. The umpire declaring it as a no ball. The reason is because the ball was not pitching into that deck. It came off the deck. And a no ball being given by the umpire. Look at the batter, how far he is standing there. Okay, this time on towards square leg region. No boundaries being scored as of now. This is very interesting phase and Scorpions are very delighted.
after winning the toss, sending into RCCREGGAI's bat first. 18 without loss, the last delivery. This time coming down the track. Oh, a cover fielder there. But doesn't go all the way. 2 runs added to the tally. The 2 fielders on the offside working in tandem. 20 without loss after the completion of 4 overs. Sumesh Bhagavat 8 of 13. Ubesh is also on 8 from 12. We are in Mirkab cricket ground. It's RCCREGGAI versus Scorpions Kuwait. Okay, Nitish is into his 3rd over. The first one drifting down leg, wide signaled by the umpire. This time straight to man at point there. Deep point. So many fielders on the field. Bit confusing for the players too. Because it's a Friday morning in Kuwait. Everyone loves to play cricket. You could watch. There are so many teams, so many players. A lot of dot ball being bowled. 4.2 overs have been completed, 22 for no loss. Interestingly, no boundary being scored this time. Back up a length, coming down the wicket. There's a man down at wideish long off. Can't stop the batters from taking 2 runs there. It's a good running between the wicket. This is how you play cricket. If boundaries are not coming, it's not necessary that every time you swing the bat and go for a big one. 1s and 2s and occasionally 3 runs will surely help. Now this time the batters shuffling across the stumps there. .25 without loss in 4.4. Again, this time placing it on the onside. Batsman wanted a second run there. Call was on, but not the run.
last delivery to come. We are into the 5th over. It's been a good start for Scorpions as well as for RCCREGGAI. Mind you, they haven't lost the wicket there. If you see the wicket column, it's very satisfactory. Look at the batter there, exposing 3 stumps. Oh, he edged it, but the keeper can't gather it correctly. 5 gone. The batter had a heart in his mouth. It's a good effort from the wicket keeper. He anticipated that a glance on the third man region, but unfortunately the catch spilled from his hand. 5 gone, 26 for no loss. 5 ओवर का खेल का खत्म. सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मिड कप क्रिकेट ग्राउंड. RCCREGGAI और स्कॉर्पियन कुवैत के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है. स्कॉर्पियंस कुवैत के कप्तान ने आज सुबह टॉस जीता और न्योता दिया RCCREGGAI बॉलर्स को, बैटर्स को बैट करने के लिए. 5 ओवर कार्य का मुकम्मल. 27 बिना कोई विकेट के नुकसान पर उबेस और सुमेश की साझेदारी. अभी 27 राउंड की 34 गेंद में हालांकि विकेटें नहीं गिरी है, रन्स उतना तेजी से नहीं बांध पाए, फिर भी संतुष्ट RCCREGGAI बैटर्स की अपने विकेट को नहीं गंवाया है. आशंका दे सेल्वा अभी नया गेंदबाज. बॉलिंग में परिवर्तन दूर वाले छोर से. एक डीप पॉइंट शॉट थर्ड मैन कवर फील्डर. कन्वेंशनल कवर है. लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग. कोई भी खिलाड़ी 30 गज के अंदर नहीं. शॉर्ट मिड विकेट, चाहे वो शॉर्ट मिड विकेट या शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ मिड ऑन, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं. सो आशंका दी सलवा दूर वाले छोर से अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर भागकर आते हुए अंपायर को पार करते ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद. इस गेंद को खेल दिया है वहां पर डीप पॉइंट की दिशा में. मात्र 1 ही रन मिल पाएगा. कहने की बात है कि RCCREGGAI ने अभी तक कोई बाउंड्रीज नहीं स्कोर किए. तारीफ करने होगी स्कॉर्पियंस कुवैत की गेंदबाजी का. कोई भी लेंथ ऐसा नहीं कि शायद बैटर्स को बाउंस कर सके. असंख्य दिसेल्वम दूसरी मर्तबा इस बार बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप पर लाइन को पकड़ते हुए बल्लेबाज थोड़ा सा वहां पर शफलिंग अक्रॉस द स्टंप्स खेलना चाहते थे. ऑन साइड की दिशा में गेंद बल्ले पे आई नहीं और शरीर पे आके लगी. और मोर इम्पोर्टेंटली इट्स अ डॉट बॉल. 28 बगैर कोई विकेट के नुकसान पर. उबेस 10 रन बनाकर नाबाद 15 गेंदों का सामना करते. आशंका सिल्वा बेहतरीन गेंद. इस बार ऑफ स्टंप थी, गुड लेंथ पे थी, पुश कर दिया था वहां पर हल्के हाथों से. बॉलर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते फील्ड करते. बल्लेबाज के पास अवसर था वहां पर अपना छोर बदलने का. स्कोर पहुंच गया उनका खेल का मुकम्मल. सुमेश 13 रन बनाकर नाबाद. और इस बार सुमेश स्वीप करना चाहते थे. चेंज ऑफ पेस वहां पर, धीमी गति की गेंद. तो सुमेश को मजबूर किया इंतजार करे थोड़ी वक्त तक कि गेंद आप तक आए. टाइमिंग वहां पर बिल्कुल नहीं, ऊपरी किनारा, लेकिन भाग्यशाली रही गेंद विकेट के पीछे, विकेट कीपर के दस्तानों में नहीं चली गई. 29 बिना कोई विकेट के नुकसान पर.
असंका दिसेल्वा 4 गेंद मात्र 2 रन खर्चा किया अभी अपनी पहली ओवर में। मात्र 2 गेंद बाकी अभी असंका दिलवा, और इस बार इस गेंद को जगह बनाकर खेल दिया है वहां पर। पहला छक्का, खूबसूरत शॉट। खराब गेंद असंका की वहां पर। पहले से उसे पता था कि बल्लेबाज तीनों स्टंप्स के कोकर ऑफ स्टंप में खड़ा है, यॉर्क करने की कोशिश थी, लेकिन अंत में गेंद फुल टॉस गिरी और उसके लिए तो तैयार थे सुमेश, मात्र जगह दी उसको बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से। पहले 6 रन के लिए 35 बिना कोई विकेट के नुकसान पर असंका के ओवर में पहला छक्का जाता हुआ। पारी का पहला छक्का। फिर एक मरतबा इस बार यही करने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन अच्छी गेंद, फॉलोड हिम। अगर अंग्रेजी में बात करो, ओवर का मुका समाप्ति 35 बिना कोई विकेट के नुकसान पर आरसीसी रिग्गाई। सुमेश बगावत 19 रन बनाकर नाबाद और उबेस 11-16 गेंदों का सामने करने के बाद। तो कुल मिलाकर बेहतरीन बैटिंग मैं कह जाता हूं तो बेहतरीन बैटिंग साझेदारी 35 रन की बिना कोई विकेट खोए। एक वक्त ऐसा था कि स्ट्रगल कर रही थी दोनों बल्लेबाज, लेकिन अभी रन बॉल में जा रहा है 6 रन प्रति ओवर। पारी का 10 ओवर शेष है और यही चाहिए कि आप शुरुआत के ओवर में विकेटिंग को ना को बरकरार रखें ताकि एक मौका बन जाए बड़े स्कोर का। उबेश 11 रन बनाकर नाबाद और स्ट्राइक ले रहे। प्रसाद प्रकाश अपनी ओवर की पहली गेंद, इस बार इस गेंद हवा में थी, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन दोनों फील्डर्स के बीचों से इस गेंद को निकाल दिया। और क्या है निशानी है कि अभी रन संख्या राशि को बड़ा करने में कामयाब हो पाएंगे दोनों बल्लेबाज। एक छक्का पिछले ओवर में और पहली गेंद प्रसाद की मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए जाती हुई, दबाव अतिरिक्त उसके ऊपर। दूसरी गेंद इस बार खेल दिया, वहां पर धकेल दिया था वाइड मिड डाउन के क्षेत्र में। 2 रन की मांग जरूर थी, लेकिन अपना पार्टनर ने उसके कहा दिया कि गेंद फील्डर के हाथ में, कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते। 29 बिना 40 माफ कीजिएगा बिना कोई विकेट के नुकसान पर। इस बार खराब गेंद, जगह बना दी थी, बिहाइंड स्क्वायर खेलना चाहते थे, थोड़ी सी फील्डिंग में रुकावट। 2 रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। ये ओवर अभी तक अच्छा साबित होता हुआ आरसीसी रिग्गाई के लिए। एक बाउंड्री, उसके बाद 1 रन, अभी दोबारा 2 रन। 8 रन आ चुके हैं 3 गेंद में, 3 गेंद शेष है। दबाव है प्रसाद के ऊपर। इस बार स्वीप करना चाहते थे, हालांकि स्वीप, बेहतरीन स्वीप, पॉइंट फील्डर के ऊपर से एक बार छक्का। और यही तो ओवर शायद आरसीसी रिग्गाई के बल्लेबाज वेट कर रहे थे। प्रकाश अपनी चारों मतलब 2 प्रेडिक्टेबल हो गए और 4 ही दफा गेंद, 2 दफा शायद एक ऑफ स्टंप से बाहर चली गई। 3 बार लेग साइड में गेंद। अभी तक खराब गेंद। अगर तीनों गेंदबाज को देखें, सुमेश अपना गेयर को बदलते हुए, इस बार कीपर के ऊपर से, मौका नहीं था वहां पर। और इस बार इस गेंद हवा में, असंका वहां पर मौजूद, लेकिन उसके सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। असंका का ये ओवर
जो आरसीसी रिग्गाई को मोमेंटम दी। 55 फॉर लॉस, 7वां ओवर का मुकम्मल। 19 रन आए आशंका के ओवर से। पचपन बिना कोई विकेट के नुकसान पर आरसीसी रिग्गाई। इस बार पहले गेंद फुल टॉस, खेल दिया उसे। इस बार डीप स्क्वायर लेग ऊपर से 6 रनों के लिए खूबसूरत शॉट। टाइमिंग और जगह बना दिया अपने आप को। लेंथ को पहले ही एंटीसिपेट किया था और एक वक्त ऐसा लगा कि स्कॉर्पियन गेंदबाज भारी हो रहे हैं, लेकिन अभी लेंथ को बरकरार रखने में नाकामयाब। इस बार अच्छी गेंद वहां पर स्टंप को छूती भी। बिना कोई विकेट के नुकसान पर। तेजी के साथ 1 रन वहां पर चुरा लिया। 62। थोड़ी सी धमकी वहां पर कीपर की। नॉन स्ट्राइकर गेंद बल्लेबाज के लिए बुलेट के जैसे स्पीड से नॉन स्ट्राइकर एंड भाग गए वहां पर। सुमेश माफ कीजिएगा। इस बार छोटी गेंद, माफ कीजिएगा स्लोअर गेंद, पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज। अच्छी रणनीति वहां पर जरूरत है स्कॉर्पियंस कुवैत को विकेटों की। अभी पार्टनरशिप 62 रन का 8.3 रन से रन आए। शुरुआत तो धीमी गति की, लेकिन उसके बाद एक बार मोमेंटम मिला। आसानी से दोनों बल्लेबाज रन को बटोर रहे हैं। अभी स्कॉर्पियंस कुवैत को विकेटों की जरूरत है अगर रनों पे थोड़ा सा अंकुश लगाना है। ओवर थ्रो के जाने वहां पर 1 रन मिलता हुआ। 64 बिना कोई विकेट के नुकसान पर आरसीसी रिग्गाई। 7.5 ओवर पारी का खेल मुकम्मल। अंतिम गेंद आना बाकी। इस बार इस गेंद को उठा दिया है वहां पर, फील्डर मौजूद। अच्छा कैच, लपक लिया। पहला झटका जरूरत था स्कॉर्पियंस कुवैत को। ये साझेदारी की तोड़ने में कामयाब हो गए। 64 पे पहला विकेट। अच्छी साझेदारी। 64 मात्र 51 गेंद में स्लाइस करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन अंतिम वक्त पर भल्ला हाथ में घूम गया और बहुत देरी तक गेंद हवा में और लॉन्ग ऑफ के पर दिशा में। अच्छी कैच, आसान नहीं कि आप गेंद के ऊपर नजरें जमा सके, और अंतिम वक्त पर बेहतरीन कैच लपक लिया। 64 पे 1 आरसीसी रिग्गाई ने अपना विकेट खोया।
8 ओवर पारी का मुकम्मल और 8 ओवर बाकी। हमारे सभी वीक्षक को ये बता दें, आरसीसी रिग्गाई वर्सेस स्कॉर्पियंस कुवैत। स्कॉर्पियंस कुवैत ने पहला टॉस जीता। न्योता दी आरसीसी रिग्गाई। शुरुआत में थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी। 8 ओवर 64 पे 1, 8 रन प्रति ओवर। अभी तक रन बनाने में आरसीसी के बल्लेबाज काफ़ी कामयाब। नया बल्लेबाज अखिल वन डाउन के रूप से। प्रसाद पहला ओवर 19। इस बार शफल करके गेंद को खेलना चाहते थे विकेट के पीछे। अच्छी कीपिंग वहां पर कि प्रसाद टू प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। स्लोअर गेंद बल्लेबाज एंटिसिपेट करते हैं अपना स्लोअर गेंद का। और ये बार अच्छी गेंद यॉर्क करा रही थी। कोई मौका नहीं। जरूरत है कि अगर बल्लेबाज शफल करता है कि यही गेंद की जरूरत। 64 पे 1, 2 गेंदे, कोई रन नहीं। और इस बार लेग स्टंपर से थोड़ी सी बाहर, लेकिन अंपायर ने इस गेंद को वाइड डिक्लेरेशन कर दिया। 65 पे 1। प्रसाद को दोबारा गेंद करनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुमेश कितना अपने स्टंप को एक्सपोज कर रहे हैं। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई। लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा गया सुमेश को। अभी अखिल नए बल्लेबाज पहली दफा स्ट्राइक पर सामना करने के लिए। प्रसाद का तीसरा गेंद। आते ही इस गेंद ने गेंद को पहुंचा दिया बैकवर्ड स्क्वायर ऊपर से 6 रनों के लिए। प्रसाद की खराब गेंद, फुल टॉस थी। अखिल जैसे तैयार थे और जोरदार प्रहार। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर ऊपर से 6 रनों के लिए। 72 पे 1। सो अखिल का इंटेंशन वेरी क्लियर है। इंटेंट है कि जाइए जनाब और अपना बल्ले को घुमाइए। कि जरूरत है कि आरसी रिग्गाई के पास विकेटें भी हाथ में। 9 विकेट 72 पे 1। इस बार शफल किया था वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए गेंदबाज को, लेकिन अच्छी वापसी वहां पर प्रसाद का द्वारा। कोई रन नहीं मिलेगा। गेंद सीधा जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में। अंतिम गेंद आना बाकी। क्या अंतिम गेंद में फिर एक दफा स्विंग एंड अ मिस। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी वहां पर प्रसाद की।
ओवर का मुकम्मल 9 72 पे 1। अखिल 6 रन बनाकर नाबाद, सुमेश 33। और सभी वीक्षकों को ये बताते आरसीसी रिग्गाई वर्सेस स्कॉर्पियंस कुवैत मुर्का पे क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मुकाबला। स्कॉर्पियन कुवैत कप्तान ने टॉस जीता, न्योता दी आरसीसी रिग्गाई और सुमेश और उबैस की जो साझेदारी 64 रन की। नीतीश ने ओवर किए 3 ओवर 16 रन विकेटलेस। रायन डी अल्मेडा बेहतरीन 2 ओवर 10 रन खर्चा किए, कोई विकेट नहीं। आशंका 2 ओवर 16 रन 1 विकेट जो उबैस का था लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और प्रसाद 2 ओवर 26 रन काफ़ी महंगे साबित हुए। 64 पे स्कोर पर पहला विकेट जो आरसीसी रिग्गाई का गिरा था। बुरान पारकर बॉलिंग में तब्दीली, दूर वाले छोर से बुरान आए, अंपायर को पार करते हुए पहली गेंद फुल टॉस थी और इस गेंद को निकल दिया दोनों फील्डर के बीच से। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। और जैसे नया गेंदबाज आता है दबाव उसके ऊपर, क्योंकि 3 मरतबा हम देखे कि गेंद सीमा रेखा के पार जाती हुई। प्रेशर है, इतना आसान नहीं कि बल्लेबाज पहली गेंद पे बाउंड्री है या छक्का खाता है तो। सुमेश इस बार अच्छी गेंद, फॉलो किया बल्लेबाज को, पहले से ऑफ स्टंप से बाहर खड़े थे। अच्छी सोच वहां पर गेंदबाज की कि अगर यदि आप लेग स्टंप पे गेंद जाते हैं वो निश्चित रूप से बाहर जाएगी। इस बार जगह बनाकर खेल दिया वहां पर डीप कवर के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग, थोड़े सा चूके जरूर लेकिन बल्लेबाज नहीं चूके। 2 रन लेने में ओवर थ्रो की मांग वहां पर। कीपर थोड़ा सा वहां पर गुस्सा जाहिर करते हुए, लेकिन कोई अतिरिक्त रन नहीं मिला। 78 1 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर पारी का खेल का मुकाबला। इस बार फुल टॉस आगे आकर इस गेंद को खेल दिया है, लेकिन गेंद पहुंच जाएगा सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बारह रन मात्र 4 गेंदों में। दबाव ही दबाव बुरान पारकर के ऊपर। उसको बुलाएगा रनों में थोड़ा सा अंकुश लगाने के लिए, लेकिन दबाव पूरा उसके ऊपर। सुमेश पहुंच गया 45-34 गेंद तक सामना करने के बाद। फिर एक मरतबा इस बार अंदरूनी किनारा लेकर गति हुई गेंद फाइन लेग की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद, बाकर आते फील्ड बॉल को थ्रो करते विकेट के कीपर के दस्तानों में। वहां पर 1 रन लेने का मौका, अंतिम गेंद आना बाकी है। Pichasi 85 for the loss of 1 wicket, last delivery to come। और इस बार गैप में खेल दिया है, बेहतरीन शॉट इन द स्लॉट, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में सीमा रेखा के पार 4 रन। और महंगा ओवर बुरान पारकर का मुकम्मल। So 10 over 89 for 1 after the completion of 10 over. It's 89 for 1. Expensive stuff from Buran Parker. 1 over went for 17. And Sumesh Bhagavat 46 of 35 changing his gear at the last minute. But this is you want to see. This is how you play cricket. Initially preserve your wickets. They were going 3 runs per over at the moment. In fact, at one time, and they changed their gear suddenly from 3 to 8, and now they are going 8.9 runs per over, 89 for 1. Last 6 overs to come. Surely they are heading into a big total unless and until Scorpions find the way to get a wicket. So this is where the things stand after 10, 89 for 1.
This time good one. Placing it on the offside. Oh, this time placing it down the ground firmly there. Two fielders working in tandem, but not successful. Burhan Parker, the culprit there, letting it go through his legs. Boundary, important one. The scorecard moves on to now 94 for the loss of 1 wicket. Very interesting phase. Akhil is going 14 from 5. Blistering start. Well, he has done here. He's been sent ahead just to finish the job, just to give the momentum for RCCREGGAI. Prasad has been. This time the ball has gone all the way to fine leg and it's been caught. Well, I was praising Akhil at one stage. The catch being taken. And finally, RCCREGGAI have lost their second wicket against a run of play. And Rafiq is a new man, comes in at number 4. So match is going in an interesting phase. This is a phase where most of the batters get out, most of the batters score runs, bowlers have some success. At the moment it's 94 for 2, going at 9 runs per over. Very interesting run rate here, because Scorpions have to find a way to break the partnership in regular interval to keep them, contain them perhaps for 140 or 150 as the next delivery. Hewed it firmly. Man at long on the bounce to him. So 140 to 150 is a very good total on this wicket. Coming down the wicket is Sumesh, placing it firmly to extra cover there, misfield. Because of the stone, but no excuse for that particular error there. Boundary. 99 for 2. Fortune favors the brave Sumesh Bhagavat. What a knock under pressure. 51 from 37. 50 comes up. And what a way to reach his half century there. He knows the value of. Oh, this time edge found soon after his 50. A good gathering catch from the wicket keeper. More importantly, Scorpions got a big man. He departs. And now it's another new batter comes in the middle. And still 5 overs to go. Well, good one, Sumesh. Thank you for the wonderful knock. 51-47. So Nisar Ibrahim walks in.
99 for 3. RCCREGGAI lost their third wicket. More importantly, a set batsman walking back to the pavilion. 11 was gone. Last 5 to go. Are we in an interesting phase here? Swing and a miss. Ryan D.B. Almeida has been brought back into the attack. 2 overs went for 10 runs. A successful bowler. Can he able to break the partnership here? Will he? The Scorpions Kuwait are looking for a wicket now. If they can break the partnership, if they don't let the batter to settle in, as this time he would it. But this time it goes over, wide long on. Yes, umpire declaration maximum. You can't afford to bowl that length, especially when you are bowling the 11th over in the slot for Rafiq. Doesn't gonna miss out on that occasion. He picked the length of the offside and he used it over that long on region. Importantly, 100 comes up for RCCREGGAI. 105 for 3 in 11.2 overs. This time wide, outside the line of off stump. Ryan, when he was bowling the first few overs, 2 overs, he was not at all in pressure. Slightly now he is feeling the heat. It's because of that 6. Now this is how the batsman plays in the minds of the bowler. Again outside the line of off stump. Because of the length delivery, he is allowing the batter to go more wider. Perhaps that wide Yorker, but he is missing that trem line. 107 for 3. Again, it's a high ball. There's a fieldsman underneath it. But he can only watch that, let it go over his head. Another 6, another maximum. So Ryan D. Almeida went for 14 runs and he had to finish off his over. This time placing it at the offside. Had he let it go, it would have been a wide. But nevertheless, both the batters are happy to take a single there. Randy Almeida there missed his mark. Again going back to his runner-up. 114 for 3. 9.6 runs per over. But this is the over, and the previous over has changed the gears. Again poor this time. Back out of square leg. Poor delivery to finish it off for Ryan. 15 came from his over. Beg your pardon, it's 21. And RCCREGGAI 120 for 3.
Scorpions Kuwait versus RCCREGGAI. Final game here at the Mid-Cup City. Scorpions winning the toss, sending into RCCREGGAI batters to bat in. First few overs, RCC Scorpion bowlers were pretty much in line, in control, and then the floodgates have opened, and now RCCREGGAI is dominating with the bat in hand. 120 for 3, 10 runs per over they are going at the moment. Last 4 to come, wickets in hand. I'm sure the remaining 4 overs will be very interesting. We have to wait and watch how many more runs they're gonna add to their tally. Rafiq is 14 of 6. Prasad is coming final time in this over. In fact, final over. The first one defended on the offside is Rafiq there. Prasad picked up in his follow through. Importantly, it's a dot ball. Well, Scorpions need plenty of those to curb the run rate. This time, just a flick of a wrist. How easily he has done it, Rafiq. Looked so easy. Pick the length. Just a risky game as well as a wrist game. Soaring over deep backward of square leg. 126 for 3. Well, both these batters are dealing in sixes at the moment. Prakash went for 42 from 3.2. 4 deliveries to come. We are in for a big run chase. We are in for a big run chase. If you are a Scorpion fan, better you believe. RCCREGGAI, they kept their mind cool. They knew that they could able to fire at the back end of the innings if you have wickets in hand. Thanks to their opening stand, they tried their best to negotiate some good deliveries, and then they targeted the weak bowlers. 126 for 3. 20 of 8 for Rafiq. Everything he is touching is turning out to be gold. This time change of pace. Excellent delivery from Prasad. Well, you expect as a bowler. You expect as a bowler to bowl those deliveries, especially at the death overs. Because Yorker is a tool. It will completely stop the batters. This time again, the batter well digged out on that occasion. Slight misfield doesn't allow the batters to take a second run there. Rafiq is off the strike now. Nisar is 6 of 11. He faced one delivery, hoisted over backward of square leg. Again, there's a man underneath it, but he could rarely watch that one sailing over his head. Go back and collect it neatly. So Nisar Ibrahim, you little beauty. First one, overs backward of square. This time over long on. So 2 deliveries, 2 maximum. RCCREGGAI 133 for 3. Well, this live telecast brought to you by BENCREATIONS. Smile on his face. 12 of 2. Nisar Ibrahim. A good cameo. But Prasad is all over today. It's not been his day. Again, change of pace there. Again, Nisar will retain the strike. 13 gone. It's 1-3-4 for 3.
So 1-3-4 for 3. So last 3 to go. Asanka started off his third over. First delivery, misfield in long on region. And ball skimming through hurriedly onto that longer boundary for 4. One, 3-8, 4-3. There is no intent. There is no confidence in Scorpions fielders. Nisar Ibrahim is playing with the bowlers at the moment. 17 of 4. Good cameo from him. Some handful runs. This time belted away down the ground, but there is a protection. It's a form of long off. If someone plays that knock, especially this level of cricket, at the back end of the innings, is very difficult for a bowler to contain. He is a 360-degree player. Change of pace, forcing the bowler to go wide of the off stump. This time he's gone too wide. Some exercise for the umpire. 139 for 3. Again, good one. This time it's in the air. Bit of juggle. Long off fielder. Prakash. Finally. Smile on his face. Well, the partnership worth 41 of 17. What a partnership. So batsmen came. They put up runs. They contributed. The partnership was the key. And now finally it's been broken. 41 of 17. It's not a little partnership. It's a good cameo. Worth of 41 runs. 140 for 4. Mind you, the first wicket fell for 64. And followed by Akhil 94. Full after that Sumesh 93 for 3. But look at that gap between Sumesh and Rafiq, 140. Asanka got a feather. So second score for him. 2.3 overs, 22 for 2. Mohammad Ali joins the lefty. Now forcing Asanka to come round the wicket. This time outside edge found. Goes towards third man region. There direct hit had to be. No wayward throw. Allowed the batter to swing and a miss this time. It's a good one for Asanka there. He had to be in the block hole. The length was there for Muhammad Ali to go on the offside. He dropped it slightly fuller. Don't give that length. Don't give the length to Muhammad Ali. Oh, this time the ball kept bit low. It's a good one. Good finish
for Asanka. Yup, 2 dot balls, goal dust, 142 for 4. Last 12 to come. Asanka 3 overs 20 for 2 wickets, 142 for 4. Last 12 delivery to come. Oh, this time cleans him up. So Nitesh gets a wicket. And off of the side, he is back in the hut. Nisar Ibrahim 18 of 6. So 1 for 2 for 5 in 14.1. The last batter dismissed was Nisar, was going well. Good cameo from him, 18 of 6. Handy knock down the order. Well, can Scorpions find a way into this game? Can they able to pick up some quick wickets? 142 for 5. This time it's a high ball. Goes way back for a maximum. 148 for 5. The Scorpions are struggling. They are struggling with the ball in hand, especially the last 10 overs or so. Oh, this time chopped on there. So Shajil, a pickup shot over deep mid wicket, and then the second delivery was a full toss, chopped on. He's walking back to the pavilion. A 6 wicket falls for RCCREGGAI, but they don't mind. They believe they've got enough runs on the board. 10.2 runs, especially in a big final. It's never easy to chase down.
1 for 8 for 6 in 14.3. Oh, this time gets a toe end of the bat there behind square. Man at fine leg, collects it neatly. There was a demand for 2 runs, but at the end, both the batters have to be comfortable, and they didn't take it. 1 for 9 for 6. Last 2 deliveries to come. Muhammad Ali 2 of 3. Naveed just now joined his teammate. So final delivery, the 15th over. This time placing it between 2 field, but there's a man. There's a man at deep mid wicket. The umpire declaring it as a no ball, and now catch being taken. It will not be considered. On top of that, it's a free hit. So Naveed is ready to face the free hit. Full toss delivery, but straight to man at wide, long on. He had to run. He had to run. Yep, taken at the end. 2 runs taken. 15 gone. It's 153 for 6. Asanka to continue the last over. Swing and a miss. The last 5 to go. Well, we have to see how many more runs they're going to fetch from here. 153 for 6. So 10 runs more from here on. They can go up to 163. So that means 10 runs per over. It's very difficult. The big ask for Scorpions when they come into bat. They got to perform well, they got to perform, they got to put up a good solid partnership up the order. That's the only way to win the game. This time slower delivery, and man at mid wicket had done no mistake. He took a simple catch, and now he's walking back to the pavilion. 153 for 7. More importantly, it's a dot ball.
Again, good one. Slightly fuller. A misfield. Misfield. So 155 for 7. 3 deliveries have been bowled out so far. 156 for 7. One in the form of overthrow. Last 3 to come. It's a good one. Good one. Navij wanted to play that ramp shot. The length was not there. Even the ball had no enough pace to run it down behind square. The last 2 deliveries to come. Comes down the wicket. Between 2 fielders. Yup, it's a good shot. So piercing that gap between long off and long on is marvellously done. .160 for 7. Can he finish off in style? Yep, he comes down the wicket. Has he got enough? No, there's a man down at long off. And he finds the throat of a long off fielder. A wicket on the last delivery. .160 for 7. And Scorpions Kuwait, when they come in to bat, they need 161 to win this game. At 10 runs per over. We are slipping into a short break. When we come back, we'll have the live action. A quick summary. What has happened? RCCREGGAI versus Scorpions Kuwait. Scorpions Kuwait won the toss. Standing into bat for Sumesh and Ubais. It's a slow start for them. They converted into big one. 51 of 38. Well batting from Sumesh. 24 of 22. Well support. Akhil 14 of 6. Rafiq some good runs. Nisar again handful knock. 18 of 6. Muhammad went for 3. Shajil went for 6. Navij 7 of 5. Vishnu 3 of 1 remained not out. Nitesh Gari 4 over 27 picked up 2 wickets. Ryan 3 overs 31 wicketless. Expensive. Asankar T. Salwa pick up the bowl of 4 overs 31 for 4. Prasad again expensive. 2 picked up 2 wickets. Burhan Parker 1 over went for 17. So 160 for Wait after 16. It's a stipulated 16 over game. We'll have a short break. When we come back, we'll have Scorpions Kuwait chasing a total of 161 to win this game.
Well, we are here again for this big run chase. Asanka and Akhilesh are the two batters in the middle. 161 required for Scorpions to win this game. Lots of expectation from the team management on these batters, especially Asanka and Akhilesh. Very good batsmen. So Safad with ball in hand from the far end. Here comes the first delivery. Asanka. Outside the line of off stump. Lets it go into the gloves of wicketkeeper. Asanka on that occasion is feeling for it. He just no need to do anything fancier. Just to see the ball, how it is behaving, and punish the odd one. So this time it's a full toss. Asanka placing it down at deep extra cover. And off the mark is Asanka as well as Scorpions. This time good shot again through covers. Are they going for a second? There's slight misfield there to hurry. Oh, this time has he edged it? Oh dear, he had edged it. He wanted to guide that one past third man. A bit of extra bounce. And the first wicket falls. So 3 for 1. The first blood being drawn. Mudassar now is on strike. Now this time it's a full toss, placing it behind square. A single off the mark. Mudassar. And that brings Asanka on strike. Safat final time in Soa. Oh, it's a good delivery. Delivery to finish it off. One gone. It's a good start for RCCREGGAI with the ball in hand. 4 for 1.
Again placing it behind square is Mudassar. The first few overs they have to negotiate well here. Let go the good ball. Rotate the strike. Don't just go for big ones. That's what the message from the team management as well. Preserve your wickets. Score runs. Rotate the strike. Put pressure on the batter. Bowler. 4 for 1. 5 for 1. Beg your pardon. It's a long way to go for Scorpions from here on. This time Asanka placing it on the onside down to long on region. Again a single. So 8 for 1. It's a 2 quick runs taken from Mudassar. Pressure on the bowler now. This one has to go over the rope. Coming down the wicket again there. Guiding down to third man region. Lucky on that occasion there is no top edge found. Extra bounce. Just seizes the bat. Drawing forward. This is a good shot. Again through covers. There's a man down at deep extra. That didn't allow the batter from taking second run. 2 gone. It's 10-11 for 1. Asanka and Mudassar, 2 batters in the middle. Some work to do for them. Some good partnership. Oh, this time Asanka missing out outside the line of off stump there. Well, he can't. He doesn't want to get out by playing a filthy shot.
Asanka this time finding it on the onside. Are they going for a second run? Yup. It's a good thinking between the wicket there. A poor throw as well. 13 for 1. Well, time for the batters to accelerate their innings now. The required run rate is going over 10.7. It's a very early stage. Well, it's a free hit for Mulla, sir. Well, the free hit didn't come in a maximum way. Just a single. Supporters were standing on their toes because it's been a quiet overs. This time Asanka finds the right of the groove as and finds a man there. So Asanka wanted to time the ball. He went for that lofted shot. But the long on was placed for that particular.
18 for 2. Last delivery to come. Asanka was the last batsman. Was caught on the long on region. 3 gone. It's a runner ball. And surely RCCREGGAI is right on top after the completion of 3 overs. So 19 for 2 after 3. Gavankar and Mudassar. Partnership. Oh, this time top edge found there. Wanted to heave it on the onside. Was not in a good position there. Was bit early. Hurried into that shot. Top edge found over the keeper's head. A lucky escape there. It was there for Gavankar. He missed out. Had he timed it well, had he keep his head cool, would have been a maximum. That brings Mudassar on strike now. Siraj Muhammad. This time it's a gentle tap on the onside. .161 was a target for Scorpion Kuwait to chase down. Again along the ground, it's a safe shot. There is a protection there. You find everyone on the edge of the circle. In fact, in the form of boundary riders. All are standing. Nobody is in front of the wicket or behind square. It's all are on the boundary rope. A man at deep third man point. Oh, this time wide, drifting down leg. But defending it on the offside. .24 for 2. It's a runner ball. 4 overs have been completed. And no boundary being scored. This time again behind square. No boundary. So Scorpions are in search of a boundary. And so far RCCREGGAI bowlers were very miser to give away. 4 gone. It's 25 for 2.
8 of 10 from Mudassar, and Babuso Gavankar 4 of 4. It's a very quiet innings. Scorpions required some cheer. Well, all the players are now vacated from the ground. And now see only Scorpions, as well as this time placing it on the offside is Babuso Gavankar. Again, hasn't timed it well. Full toss on the onside. Again, good shot on the offside. Oh, it's a slight misfield there. It will go all the way for a boundary. Yep, it's a welcome boundary. Well, you need some sort of luck when there is a quiet innings. It's a sign of a good thing for Scorpions. A beautiful shot, carries it on the offside. Slight misfield. Race away to the boundary for 4. 32 for 2. This will bring some smile on the faces of the batters. Mudassar 12 of 11. This time placing it behind square. Demand for a second run. But there's a fielder inside the ring there to curtail that one. So 33 for 3. Well, this partnership is 15 at the moment. You need more runs. You need more runs. 128 runs required from 11.2 overs. It's almost going 12 runs per over. This time forcing it outside the line of off stump. They will take in the forms of by there. So 35 for 2. Swing and a miss. Swing and a bail. Ball sneaks through into the gloves of wicket keeper there. And hopes and expectations on Mudassar. Again, no timing. It's just finding it the edges there. Sometimes edges are handy too. Not this time though. 5 gone. It's 35 for 2. 36 for 2.
Well, 36 for 2 after 5. 36 पे 2, 5 ओवर मुकम्मल, 125 रन आउट चाहिए 11 ओवर। इस बार बैकअप लेंथ गेंद खेल दिया उसे बिहाइंड स्क्वायर, थोड़ी सी मिसफील्ड, सीमा रेखा के बाद सो 40 पे 2। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, थोड़ा सा वेस्ट है, वेट करना पड़ेगा अंपायर डिसीजन का वहां पर, नो बॉल या नहीं। जी हाँ, नो बॉल। सो 42 पे 2। ये ओवर का शुरुआत है। लक्ष्य को पीछा करने के लिए स्कॉर्पियंस कुवैत थोड़ा सा टीम से बैकअप मिलता हुआ हम पर बबूसो गवानकर 7 रन बनाकर नाबाद। 42 पे 2। इस बार फ्री हिट, बल्ले का बाहरी किनारा। इस बार फुल टॉस अंदर आती हुई है गेंद, वहां पर मिसफील्ड, 2 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। प्रेशर अभी फील्डिंग साइड के ऊपर है बिकॉज दबाव है। $116 फ्रॉम 10.3 रिक्वायर्ड रन रेट 11 रन चाहिए प्रति ओवर यहां से ये मुकाबला जीतने के लिए। इस बार हवा में गेंद, उस पर टाइमिंग नहीं, थोड़ा सा वाइड ऑफ मिड ऑफ दे। 2 रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। जी हाँ, सैतालीस। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद। अड़तालीस पे 2। इस बार हवा में खेला, ऊंचा स्ट्रोक, फील्ड्समैन वहां पर नीचे और आउट।
48 पे तीसरा विकेट। मुदस्सर थोड़ा सा अच्छे नजर आ रहे थे, लॉन्ग ऑन की दिशा में आउट हो गए। अभी थोड़ा सा प्रेशर बैक ऑन स्कॉर्पियंस कुवैत। शाहरुख नया बल्लेबाज, काफी जरूरत है साझेदारी की, जरूरत है रनों की और तेजी में आना है। अभी 11 रन, 11.1 रन प्रति ओवर। यहाँ से अगर स्कॉर्पियंस को जीतना है ये मुकाबला, सिराज मोहम्मद की अंतिम गेंद आना बाकी इस ओवर में। शाहरुख, इस बार शाहरुख खेला स्क्वायर लेग की दिशा में। थोड़ा सा खोल कर खेल रहे, जरूरत है विकेटों के, थोड़ा सा एक्सपोज करें, ऑफ स्टंप पे जाए और स्क्वायर लेग की दिशा में रन आ रहे हैं। छठा ओवर पारी का मुकम्मल, 49 3 विकेट के नुकसान पर। अभी अभी आउट होने वाले बल्लेबाज मुदस्सर, उसने 23 रन बनाए और लॉन्ग ऑफ की दिशा में कैच आउट हो गए। सो 49 पे 3, 6 ओवर पारी का मुकम्मल। शाहरुख स्ट्राइक पर और अखिल आए दूर वाले चोर से। अखिल आए, चल पड़े, ऑफ स्टंप से पहली गेंद बाहर थी, वाइड का इशारा। 50 रन पूरे होते हुए स्कॉर्पियन कुवैत का 8.3 रन से प्रति 8.3 रन प्रति ओवर से रन बनाए। इस बार स्वीप करना चाहते थे बिहाइंड द स्क्वायर। एक ही रन मिल पाएगा वहां पर। इक्यावन पे 3, 50 रन आए थे। पिछली गेंद में वाइड का इशारा था अंपायर के द्वारा बाबू गाउनकर, उसकी विकेट काफी महत्वपूर्ण होगी। स्विंग एंड अ मिस, इस बार छोटी रह गई गेंद। और इस बार पहले से बाहर आ चुके थे। 2 रन लेने की मांग है वहां पर, तेजी से भाग कर लेंगे। जी हाँ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। उल्टा जरूर था वहां पर, पहले से निकल चुके थे स्टंप से, इसलिए अंतिम वक्त पर इस गेंद को यॉर करना पड़ा। ऑन साइड में 2 रन बटोर लिए गाउनकर। इस बार इस गेंद को खेल दिया है सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर तैनात। इस बार 2 रन नहीं मिल पाएगा, सीधा वहां पर थ्रो, नॉन स्ट्राइकर एंड बॉलर के दस्तानों में। और शाहरुख क्या कर पाते हैं अभी ये गेंद को। पुल करना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद आया नहीं बल्ले पर। अच्छी गैदरिंग वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रेशर स्कॉर्पियंस के ऊपर, क्योंकि बहुत रन को पीछा करना है प्रति ओवर। अभी 12 रन चाहिए यहां से। फिर इस मरतबा गेंद अंदरूनी किनार लेती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में चली गई।
सो 7वां ओवर मुकम्मल, 55 पे 3। एक लंबा और बड़ा ओवर की ज़रूरत स्कॉर्पियंस को, थोड़ा सा मोमेंटम बरकरार रखने के लिए। 55 पे 3 रिक्वायर्ड रन रेट 11.8 रन प्रति ओवर यहाँ से अगर ये मुकाबला जीतना है। लेकिन स्कॉर्पियंस को चाहिए एक बड़ा ओवर, कम से कम 20 रन का। अगर 2 ऐसे ओवर आएंगे तो मैच बदल सकता है यहाँ से। विष्णु दूर वाले छोर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार पहले ही स्टंप को चोट गए थे वहां पर, यॉर्क गेंद सीधा स्टंप पर लगती हुई। सो चौथा विकेट गिरा स्कॉर्पियंस का 55 के स्कोर पर। सो शाहरुख लास्ट बैट्समैन डिसमिड, अभी बुरान पार्कर। एक सौ रन की दरकार, 8.5 ओवर, हाथ में 6 विकेटें। मांग तो मुश्किल, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट अब यहां से 12 रन चाहिए स्कॉर्पियंस को। इस बार स्विंग एंड अ मिस। इस बार बुरान ने जानबूझकर खेल दिया, वहां पर ग्लैंस किया था पीछे थर्ड मैन। अगर खिलाड़ी मौजूद है 2 रन लेने में नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। इस बार गेंद पैरों पे लगती हुई बुरान की। फिर एक दफा स्विंग एंड अ मिस। ये मैच यहाँ से काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। 12 रन, 12.7 रन प्रति ओवर, एक गेंद।
104 रन की दरकार 8 ओवर में। बाबूसो गावनकर 11 रन 10 गेंद में। बुरान फारकर इस बार हवा में खेला हुआ शॉट देखना पड़ेगा, एक ही रन मिल पाता है या नहीं। वहां पर रन की दरकार है, थोड़ी सी मिसफील्ड। बुरान फारकर रन आउट होने की चांस था वहां पर, बाल बच गए। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गैप में खेला हुआ, सीमा रेखा के पार 4 रन। इन द स्लॉट, आगे गेंद थी और सामने की ओर सीधा सेफ शॉट चाहिए 7.4 ओवर में। बाबूसो गावनकर 16 रन 17 रन 12 गेंद। इस बार खेल दिया है वहां पर, मिसफील्ड वहां पर। सो 65 पे 4। दबाव है अभी बल्लेबाज के ऊपर, प्रेशर है गेंदबाज के ऊपर। और इस बार हवा में गेंद सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। और यही ओवर की जरूरत। 90 रन चाहिए अभी 7.2 गेंद में। 25-14 गेंदों। बाबूसो गावनकर तो 71 पे 4। और इस बार अच्छी गेंद, और गेंद थी वहां पर। तो 72 पे 4। इस बार वाइट ऑफ स्टंप से बाहर दिए गेंद 73 पे 4। और इस बार खेल दिया सामने की ओर, लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक ही रन मिल पाएगा। 9वां ओवर मुकम्मल। 74 फॉर 4। 74 पे 4। स्कॉर्पियंस कुवैत। आरसीसी रिग्गा और स्कॉर्पियंस कुवैत फाइनल मुकाबला इस मिरकब क्रिकेट ग्राउंड से लाइव सीधा देख सकते हैं। बेन क्रिएशंस स्कॉर्पियन कुवैत कप्तान ने टॉस जीता और न्योता दी आरसीसी रिग्गाई 160 रन 16 ओवर में। और उसका लक्ष्य को पीछा करते हुए स्कॉर्पियंस कुवैत थोड़ा सा लड़खड़ा रही है। 74 पे 4। 87 रन चाहिए 7 ओवर में। 12.4 ओवर यहाँ से रन बनाने, लेकिन बड़े ओवर की अगर 2 बड़े ओवर 20-20 रन का आ जाते हैं, शायद मैच बदल जाता है यहाँ से। बुरान पार कर 3 रन बनाए 6 गेंदों का सामने कर, लेकिन बाबूसो गावनकर 26, उसकी विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसका इनिंग्स मैच को बदल सकता है स्कॉर्पियंस कुवैत का। अकील 2 ओवर 23 रन दिए। अभी विष्णु 1 ओवर में मात्र 2 रन। ये ओवर काफ़ी बड़ा जाना है। 15-16 रन का ओवर अगर एज निकलता है
इस बार खेल दिया सामने की ओर, बेहतरीन शॉट, वन बाउंस इनटू द फेंस। डीप मिड विकेट, वहां पर काफी गैप था, फासला था, और बुरान ने अपने चमत्कार वहां पर दिखाते हुए सीमा रेखा के पार गती हुई गेंद 4 रनों के लिए। पिछले ओवर में अच्छा रन आया था, और यहाँ भी पहला ओवर, पहली गेंद, पहली ओवर की पहली गेंद विष्णु की, मात्र उसकी दूसरी ओवर की पहली गेंद सीमा रेखा के पार, दबा उसके ऊपर। अभी 88 पे 4, 78 पे 4, माफ कीजिएगा, 83 रन और चाहिए। अभी रन रेट एक समय तक 13 था, अभी 12 रन चाहिए यहां से। अभी वहां पर देखिए, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, 4 फील्डर ऑन साइड पे, और इस बार में हवा में खेला हुआ शॉट, फील्डर वहां पर भागकर आया। अस्सी पे 4, 81 6 इस बार बुरान ने खेल दिया ऑन साइड में, स्क्वायर लेग फील्डर मौजूद है वहां पर, एक ही रन मिल पाएगा। 81 पे 4, इस बार स्वीप किया है वहां पर। सो 82 पे 4, 2 गेंद बाकी है। इस बार बुरान ने खेल दिया उसे ओवर डीप मिड विकेट, बेहतरीन शॉट। अट्ठासी पे 4, बुरान ने इस गेंद को पहले पढ़ लिया, डाउन ऑन हिज नीज इन द स्लॉट। ओवर 73 पे 73 चाहिए अभी, एक वक्त पर 13 रन चाहिए था प्रति ओवर। अभी रन रेट 11.8। अंतिम गेंद आना बाकी है, छक्का की जरूरत। 88 for 4, अंतिम गेंद, कहां जाते हैं बुरान। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, नवासी पे 4, 10 ओवर मुकम्मल और 6 ओवर बाकी, 72 रन चाहिए। 72 from 6। So 84, 89 for 4 after 10. The 2 overs really brought the Scorpions back into the game now. 72 more runs required from 6 overs. So 12 runs per over. Couple of 2 good overs from here on can change the course of the game for Scorpions. Of course, they don't want to lose any wicket here. Buran and Babu, so they are timing the ball well, finding the middle of the bat. 2-3 occasions we did see the ball going over the ropes.
89 for 4. Buran Parker 17 of 11. Babuso Gavankar 27 of 16. Sumesh Bhagavat is pick up the batsman outside the line of off stump. Wide signal today, 51 he made, and seriously is a leading contributor in his side to take his side for 164. Oh, swing and a miss. Swing and a miss. Oh, this time it's a high ball. Has he got enough legs? So Babuso Gavankar, the ball hit him on a high. He didn't hit him in the middle of the bat. Had he timed it well, had he got a good piece of it, would have been a maximum over long gone. So Babuso Gavankar departs with him, perhaps the Scorpions' hopes of winning this game. So 70 runs in 5.3 overs with 5 wickets in hand. The partnership has been broken now. Apur. So 91 for 5. Oh, shot there, picked his spot. Over the ropes is Buran goes. 98 for 5. 63 required from 5.1. Gettable in modern day cricket. So Buran 98 for 5. This one has to depart. This one has to go over the ropes for Scorpions. Oh, he didn't connect it well there. He retained the strike. Yep, he missed it. So 99 for 5.
after 11. So 63-62 from 5. Hundred for 5 in 11.1. So 2 dot deliveries. इस बार हवा में खेला हुआ शॉट. The ball kept high and Appu departs. Every dot ball is increasing the pressure. 13.6 now. So 100 for 6. Oh, this time Buran. इस बार फुल टॉस थी, वहां पर खेल दिया मिड विकेट की दिशा में. एक ही रन. सो बुरान को जरूरत है अभी ये टीम को लक्ष्य की ओर छक्के की जरूरत है इस ओवर में. काफी अच्छा ओवर. सो वेरी गुड ओवर, टाइडी ओवर. कैन Buran find this one over the ropes? No, he doesn't. He doesn't.
gone. So 60 from 4, 15 runs per over. $60 from 4 overs. So change of pace, placing it down the ground firmly. So 102 for 6. 59 from 3.5. It's a tough ask for Scorpions unless they do something. $59 from 3.4. The run rate is keep on climbing as a next delivery. Placing it on the offside, but just a single there. The required run rate is 16 runs per over from here on. Oh, it's very, very difficult. It's a difficult ask for the Scorpion batters because every dot ball as well as singles will hurt their run rate. Oh, this time is going against that swing there. It's a leg spin. It's a leg break, rather you would call. Is hurting the run rate now. 58 from 3.2. The winning of this game is diminishing for Scorpions Kuwait. Because they need a big over of 20 runs. So 17 from every over from here on. Now this time again, swing and a miss. Varun Parker, end of the over. What a good spell from Vishnu. So 57 from 3 overs. So 20 runs from every over. It's a very difficult ask for Scorpions.
So 20 runs required from here on in every over to win this game for Scorpions. It's a difficult ask rather. Oh, this time he placing it. Has he got enough? Has it got enough? It's a good work there. Down in the mid-wicket boundary. Well, just 2 runs yielded in first 2 deliveries. But it will not solve the equation. The equation is getting tough and tough. The run rate is climbing high. Every dot ball, every single runs will not hurt RCC Reggai. Oh, this is in the slot. This had to go. No. It's just a formality for Scorpions. So end of the road for them unless something happens. Oh, this time gets a toe end of the bat. Frustrated with this batting effort there. There's nothing. Well, he got to admire the bowling effort. Especially last few overs, despite of going for big runs, the 2 overs then they brought back into the game. So, middle overs, especially the last few overs have resulted in just 2-3 runs. As a result, the run rate this time he finds the rope. Goes over mid-wicket. They missed the length by a whisker. And it decimated over mid-wicket boundary. 113 for 6. 48 from 2. That means every delivery has to go over the ropes. So 14 overs have been bowled out. 113 for 6 Scorpions. They need further 48 from 2 overs. Difficult ask. That means every delivery has to go over the ropes. So Vishnu, 3 overs 20. Good spell from him.
So 115 for 6. Varun doesn't get in the slot there. Top edge, race away towards point region. Again a poor throw, 3 runs came. $118 for 6. Varun coming, this time deep, coming down the wicket is Nitesh there. Didn't do much with the bat in hand. Of course, the first 2 overs bowled from him was very, very good. But this is nothing. Scorpions are well behind this game right from the word go, because the reason why they are behind is not they didn't put up solid partnership this time. It has muscled. Has it got enough? It has. It's too late for Scorpions. Is it too late for Scorpions? Because the deficit is now 36 runs. So this 3 delivery has to go over the ropes in order to bring somewhere close to their total. There was a chance for Varun this time to go big there, because he was already shuffled across the stumps. $125 for 6, 36 from 1.2. This time swing and a miss. An umpire declaring it as wide. So 34 from 1.2. So Varun had a good chance to go bang. He missed out. A full toss delivery on the leg stump. Had to travel. Oh, has he got enough? He has. So 28. So 28 from last one. So 4 maximum and a 1 boundary will seal the deal for Scorpions. It's not easy. It's not an easy deal for Scorpions. 28 runs required of the last one. Well, Scorpions bowlers would be kicking themselves because they haven't bowled well, especially in the death overs. Resulted them in a flurry of runs, and now they are struggling. The Scorpions came too close despite of losing wickets up the order. If there was a good partnership in the middle or some fiery, some blistering runs in the top order, perhaps helped Scorpions to
to come more closer even. But 28 in 1 over is a difficult task. Pressure is on the bowler, but more pressure is on Burrard now. It's a very good innings from him, well constructed, calculated innings. In fact, he started off low, 43 from 26. He surely brought Scorpions close to their target, but it's not too close to win the game. Nevertheless, 28 from 1. Sumesh, first over went for 10. Started off with a 1, over the rope, over deep mid wicket. Oh, he's a slimmer of hope here. A slimmest of hope. 22 from 5. A full toss that has gone over the ropes. Or is there a twist in the tail? All the players walking to his bowling mate there, having a word with him. So Burhan Parker, 49 of 27. First one over deep square leg. Where does this gonna go? Can he bring up his half century in style? He does bring up his half century. So 140 for 6. A good innings from Burhan Parker, 50 of 28. Well done, Burhan. It's not good enough to bring close. 21 from 4. We are into the close finish. Nitesh on strike. Oh, Nitesh gets a full toss. Has he got enough? No, he finds the man down at square leg there. There was a chance for Nitesh. The ball hit him on high. There was a chance for him to go over the ropes. Unfortunately for Nitesh, he missed out. So 21 from 2. It's just a final rights for Scorpions. Too close yet so far. So close yet so far. That's a story for Scorpions Kuwait. It seemed that they are in the game at one stage, and then again the RCCREGGAI, they pull the game back with some good overs in the middle, and now they are victorious. 21 from 1. Has he got enough? Yes, it does go all the way for a boundary, but it's not enough for Scorpions. They lost the game. RCCREGGAI won the game by 17 runs.
The deficit is of 17. Scorpions Kuwait skipper won the toss, sending in RCCREGGAI batters to bat in 116 stipulated. But in reply, Scorpions Kuwait fell short of 16 runs to win the game. Oh, that's it from the mid-cup cricket ground. Until we see you again, thanks for tuning in. KPL